Okay. So when we talk about the substantive procedures question in our AA exam, you can be rest assured that there will be at least one question in your exam which will be built around substantive procedures. This question is basically it could pick up two or three areas in the financial statements, and it would ask you to frame substantive procedures with respect to those areas. Say, for example, it could be around property, plant, and equipment, or it could be regarding a loan that the company has undertaken. It could be about some stock that the inventory has, as in the procedure could be around inventory. It's usually the 20 marker that contains substantive procedures. The 30 mark question, more often than not, is a question on risk. So, in the 20 mark question, before you start answering, say, for example, the question is asking you to frame substantive procedures with respect to property, plant, and equipment, or with respect to bank loans. The first question that you should ask yourself is, what are the assertions in financial statements that are primarily affected by this? Now, what are financial statement assertions? Financial statement assertions are claims made by the people preparing the financial statements. What do we mean by claims made by people preparing the financial statements? Say, for example, I prepared my balance sheet P&L, and therein I have written that I have a building worth 20 crores, and I have inventory worth 6 crores, and I have a loan worth 15 crores outstanding. Now, what am I saying? If there is a property, plant, and equipment, there is a building worth 20 crores. What are the claims that the management is making? First claim, अगर मैंने बैलेंस शीट में लिखा है कि there is a property or there is a building worth 20 crores, the first claim that I am making is कि ऐसा कोई building exist करता है. There exists a building in my business. So the first thing that I am claiming is the existence of a building. अगर मैं 20 करोड़ का बिल्डिंग दिखाता हूं, that means 20 करोड़ का बिल्डिंग मतलब मेरे पास बिल्डिंग है. So the first claim that I am making is with respect to the existence of the building. That is the existence assertion that an item stated in the financial statements actually exists in the business. The second claim that I am making is, यार मैंने बिल्डिंग का वैल्यू लिखा है 20 करोड़. That means I am making a claim about the value of the building कि बिल्डिंग तो है, no doubt, but ये बिल्डिंग कितने का है? ये बिल्डिंग 20 crores का है. Then maybe वो बिल्डिंग पे I have charged depreciation. What is depreciation? Depreciation is a systematic reduction in the value of the asset. So उस बिल्डिंग का वैल्यू फ्यूचर में कम भी हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. सो आई एम मेकिंग अनदर क्लेम कि ये बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ है, तो मुझे again, I'm talking about the valuation assertion. I cannot claim a building that belongs to Umang as my building in my financial statements. मैं कौन से बिल्डिंग को मेरी बिल्डिंग बोल सकता हूं? I can say that a building belongs to me if on paper, मतलब उसका जो टाइटल डीड है, जो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स है, दोज रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन माय नेम. इफ दैट इज देयर, देन आई कैन से यार ये बिल्डिंग पे मेरा हक है, ये मेरा बिल्डिंग है. Right. So again, I am saying that I have an ownership over that building. I am talking about my rights with respect to the building. I am making an assertion with respect to the ownership. So that is the rights वाला assertion, rights and obligations वाला assertion होता है आपका balance sheet का. And then where am I showing this building? I am showing this building in the financial statements under the heading non-current asset, which means I am talking about the presentation. Non-current में दिखाया कि current में दिखाया. अगर मैंने उसको non-current में दिखाया, what is the claim that I am making? I am saying कि yes, this building is more than, I expect to hold it for more than 12 months from the reporting date. अब मेरे जो प्रोसीजर्स फ्रेम होंगे, माय प्रोसीजर्स विल बी फ्रेम्ड कीपिंग द असर्शंस इन माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई हैव टू चेक द असर्शन ऑफ एग्जिस्टेंस, मैं क्या करूंगा? इफ आई वांट टू नो वेदर ताहिर एज अ ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट्स और नॉट, मैं बोलूंगा ताहिर प्लीज ओपन योर कैमरा एंड लेट मी सी योर फेस. दैट इज, आई एम वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पर्सन इन द मीटिंग. अगर मुझे वो बिल्डिंग का वैल्यू वेरीफाई करना है, तो what will I say? I will say, okay, show me the purchase deed of this particular company. Purchase deed मतलब there is a document officially legally registered in my name जिसपे लिखा होगा कि this building was purchased for 5 crores, for example. तो I will verify the cost of the building from that.
अगर बाद में मुझे पता चलता है कि द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग हैज गॉन अप, ठीक है, मतलब रीवैल्यूएशन हुआ है, तो यार कोई राह चलता आदमी तो रीवैल्यूएशन नहीं कर सकता। और नीदर कहना ऐसे कि अरे सर मुझे लगा तो मैंने 5 करोड़ का 20 करोड़ कर दिया। इफ आई वॉन्ट टू वेरीफाई द वैल्यू, हाउ डू आई वेरीफाई द वैल्यू? आई वेरीफाई द वैल्यू बाय आस्किंग फॉर आस्किंग वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, कि आप मुझे वैल्यूएशन सर्टिफिकेट दिखाओ। देन आई विल चेक कि हु मेड द वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, was it made by a registered valuer who is authorized to do this particular activity? I will ask that copy of the valuation certificate. मैं check करूंगा कि the person who has done the valuation, is he actually certified to do that? मतलब is it a certified verified professional who is doing this particular valuation? फिर मैं check करूंगा वो document signed है या नहीं। I will do all of these steps to verify the value of that particular building. Then I want to see whether this building is actually in the name of the client. मैं client को बोलूंगा तू मुझे title deed दिखा, show me the title deed, show me the purchase deed। वो purchase deed पे नाम लिखा होना चाहिए उमंग। If the name Umang is written there, that means कि ये बिल्डिंग उमंग के नाम पे रजिस्टर्ड है। सो राइट्स वाला जो असर्शन है वो वेरीफाई हो गया। देन आई वांट टू प्रोबेबली वेरीफाई द प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि आई हैव शोन इट इन द बैलेंस शीट एज अ नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट मतलब आई एम सेइंग दैट दिस बिल्डिंग विल बी इन एग्जिस्टेंस, सॉरी दिस बिल्डिंग विल बी विथ मी फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो सी यहाँ पे it is a slightly difficult thing to judge. How do I know that this building will be held for more than 12 months from the balance sheet date? Maybe I will have to make inquiries of management. I will have to understand why is it being shown for a period of more than 12 months. तो वो मेरा presentation वाला assertion verify हो गया। So all my substantive procedures should be framed with this idea in mind कि यार what are the financial statement assertions affected by this existence, valuation, presentation, disclosure, then rights and obligations. Make a list of those assertions and then ask yourself the question कि मैं existence कैसे verify करूंगा? मैं जाके बिल्डिंग को फिजिकली इंस्पेक्ट करूंगा कि भाई बिल्डिंग है कि नहीं है, या वहां पे देयर इज जस्ट एन ओपन ग्राउंड एंड मैंने बस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में झूठा बिल्डिंग दिखा दिया। सो आई विल हैव टू आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई करूंगा? इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना है, आई विल हैव टू बी प्रेजेंट एट द फिजिकल वेरिफिकेशन। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन वेरीफाई करना है। IAS 2 has very clearly said how is the valuation of inventory done? Lower of cost or net realizable value. मुझे कॉस्ट को वेरीफाई करना है, मैं क्या बोलूंगा? चलो शो मी योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, टेल मी द कॉस्टिंग और शो मी द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स दैट यू हैव मेंशन्ड। मटेरियल कितना, लेबर कितना, वो मटेरियल वहां पे लिखा है, मटेरियल कहाँ से वेरीफाई करूंगा? मटेरियल कॉस्ट, बोलूंगा चलो मटेरियल के बिल दिखाओ। लेबर कॉस्ट वेरीफाई करना है, बोलूंगा चलो वेज रजिस्टर दिखाओ। By doing this, by identifying the assertion of the financial statement that is affected, I will be able to frame the audit procedure around it properly. And that can be considered as the base for deciding how the substantive procedures have to be framed. So, framing of substantive procedures is not something, that is different in every case. I would say verification, yeah, preparation of these substantive procedures is not a tough job, provided you know what aspects of financial statements are affected by it। कहीं पे इन्वेंट्री काउंट होगा, कहीं पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, कहीं पे मे बी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन होगा, बहुत सारा चीजें हो सकता है। बट द एंड रिजल्ट इज mentally when you read the question, make a list of the financial statement assertions that are impacted। एक बार वो हो गया, then फटाफट start framing the procedure कि यार मैं existence कैसे verify करूंगा? अगर P&L का item है तो you should ask yourself कि मैं occurrence कैसे verify करूंगा? ये activity हुआ कि नहीं हुआ? या फिर identify, suppose the assertion you are testing is valuation, inventory का value आप कैसे verify करेंगे? Let just that be the point of concern for you, बाकी everything else will automatically fall into place। So what I have is there are 3 questions that I have chosen specifically for substantive procedures। थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज ऑल्सो विल कम इन हैंडी फॉर यू कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सपोज इन्वेंट्री है तो व्हाट डज IAS 2 से, सपोज आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो IAS 38 में क्या लिखा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ठीक है, दिस इज
a simple question, not a very long one, but the idea is to familiarize you with the approach. ठीक है. What is the first requirement? Describe substantive procedures the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to the revaluation of L&R Company's property, plant, and equipment. Describe substantive procedures the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to valuation of inventory. Okay, अभी just हमने discuss किया था. And describe substantive procedures the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to Elonda Company's bank loan. Describe the procedures the auditor of Elonda Company should perform in assessing whether or not the company is a going concern. Okay. Chalo, let's have a look at the data in the question. It is 1st of July 2005. Elonda Company manufactures chemical compounds using a continuous production process. Its year end is 30th April 2005 and the draft profit before tax is 13.6 million. You are the audit supervisor and the final audit is due to commence shortly. The following matters have been brought to your attention. First of all, this is the final audit, not the interim audit. ठीक है. What is my year end? Year end is 30th of April. ठीक है. And today's date is 1st of July. कंपनी का पीबीटी है 13.6 million. अब this PBT might be an important point for you if you have to judge the materiality. तो just you need to keep that in mind कि यार यहाँ पे somewhere the materiality of the item we might have to focus on that. एंड विच इज वाई वी शुड बी रेडी कि यार इस पे अगर materiality calculate करके रख दो. If at all you are performing the procedure and you realize that the value of a particular item does not cross the materiality threshold, you might just want to ignore that particular item. ठीक है. So first thing, ये एक aspect हो गया. And now let's go deeper into understanding कि यहाँ पे revaluation of property, plant and equipment के बारे में they want substantive procedures to be framed. So how should those be tackled? At the beginning of the year, management undertook an extensive review of L&R Company's non-current asset valuation and as a result decided to update the carrying amount of all PPE. The finance director, Peter Dullman, contacted a sibling, Martin, who is a valuer, and requested that Martin's firm undertake the valuation, which took place in May 2004. Now, the problem here, I mean, even before we start substantive procedures, I see one problem here that it is the brother of this person who has undertaken the valuation exercise. So, there might be, first of all, there is naturally a conflict of interest that is possible here. So we'll have to understand कि यार ये बंदे का qualification सही है कि नहीं? Is he even authorized to do this? What is his experience? Does he have the membership of a professional body? ये सब अपना आने वाला है. ठीक है. Now remember one thing. Wherever you have a situation where more than one item का total आने वाला है in the balance sheet, मतलब suppose you are verifying sales, suppose you are verifying purchases. यहाँ पे you are verifying not one property, you are verifying the entire non-current asset का population as such. तो अगर आपके पास 100 अलग अलग नॉन करंट असेट्स होंगे, उनका टोटल मिलके एक जगह पे आ रहा है बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो वेर एवर यू हैव अ सिचुएशन वेयर total of multiple items constitutes one value in the balance sheet, your procedure, one of your first procedures should be take a schedule of those particular items. Schedule मतलब उसका एक list ले लो, list of all the items that have been in this case revalued, and take the total to confirm completeness of the कैलकुलेशंस. मतलब आपको ये चेक करना है कि अगर मेरे पास 10 आइटम्स थे विच वर सब्जेक्ट टू रिवैल्यूएशन, तो उसका लिस्ट लो, उसका टोटल चेक करो एंड सी वेदर द बैलेंस flows into the trial balance and then the total also goes into the balance sheet. This procedure should be applied for all circumstances where total of multiple items constitutes one figure in the balance sheet. तो ये P&L होने दो, ये बैलेंस शीट होने दो, ये कोई भी सॉरी एरिया होने दो जहां पे मल्टीपल आइटम्स का टोटल फॉर्म्स वन वैल्यू इन द बैलेंस शीट. मतलब
सेल्स का अगर आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो देयर वुड बी 1000 सेल बिल्स इन द सेल्स बिल रजिस्टर। उसमें का टोटल वैल्यू विल गो टू ट्रायल बैलेंस एंड दैट वैल्यू विल गो टू बैलेंस शीट। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो सेल रजिस्टर का टोटल है वो टोटल इज कमिंग टू ट्रायल बैलेंस एंड दैट टोटल इज गोइंग टू बैलेंस शीट। सिमिलरली, if यहाँ पे there is not one single non-current asset that is being revalued, there are multiple such assets which are being revalued। तो आप क्या करेंगे in that case where multiple such assets are being revalued, you will take the total of all of those। उसका आप जो भी आपका नॉन करंट असेट रजिस्टर होगा, लिस्ट ऑफ रीवैल्यूड आइटम्स होगा, जो भी होगा, आप वहां पे उसका टोटल चेक करेंगे रीवैल्यूड आइटम्स का। वो टोटल समझो दैट टोटल ऑफ 10 आइटम्स इज 1 crore। you will see whether that 1 crore has flown into the balance sheet total, and then you will verify कि यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू है वही वैल्यू इज इट बीइंग शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। one of the claims made by the auditor is that the auditor wants to verify, he wants to express an opinion whether items which are shown in the balance sheet are they the exact items that are there in your books of accounts। तो books of accounts में जो दिख रहा है क्या वो सारा का सारा has it been shown in the balance sheet। तो that so totaling is a very English language, layman word। अगर आपको उसको ऑडिट में यूज करना है you should use the word cast। ठीक है। so when you are framing procedures specifically on और यहाँ पे तो चलो यू आर टॉकिंग अबाउट रीवैल्यूएशन, बट एज आई सेड वेर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी आइटम जहाँ पे टोटल ऑफ मल्टीपल आइटम्स goes to the balance sheet as one single figure or goes to the P&L as one single figure, the first procedure you should always write down is with respect to the totaling only। So you should say that obtain a schedule of all the PPE revalued। या कभी आप लेजर मंगा सकते हो, बट यहाँ पे वॉट एवर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिवैल्यूड देयर मस्ट बी अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। सो यू विल से obtain a schedule of all property plant and equipment revalued during the year, and don't say total because that's an English language layman word। You will use the word cast and cast the total to confirm what? To confirm the accuracy and completeness of inclusions and uh, match the total match the total value with the trial balance पहले and the value shown in statement of financial position, that is balance sheet। So आप पीपीई का स्केड्यूल लो, उसका टोटल करो, वो टोटल को आप टैली करो विद द ट्रायल बैलेंस एंड द वैल्यू शोन इन द एसओएफपी। अगर आपको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड साउंड करना है ऑडिट के पेपर में, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग द वर्ड मैच यू शुड यूज द वर्ड अग्री। ठीक है। दिस इज वन वर्ड दैट यू शुड यूज, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। इज सेइंग द वर्ड मैच और टैली इनकरेक्ट? नो, इट्स नॉट, बट अग्री इज मोर अप्रोप्रिएट। ये हो गया आपका पहला प्रोसीजर। तो schedule and cast procedure should be used whenever you have a whenever you have the following situation। What situation? A total of multiple items gets added up and is shown as one single figure in statement of financial position और statement of P&L and OCI। जहां पे भी ऐसा सिचुएशन है यू शुड यूज द स्केड्यूल एंड कास्ट वाला प्रोसीजर। यहाँ पे आप सेल्स रजिस्टर लेंगे अगर सेल्स होगा तो, परचेस रजिस्टर लेंगे अगर परचेस होगा तो, अगर ओवरऑल नॉन करंट असेट होगा तो आप नॉन करंट असेट रजिस्टर एंड लेजर लेंगे। यहाँ पे यू वर ओनली टॉकिंग अबाउट रीवैल्यूड आइटम्स, तो आपने सिर्फ उतना कंसिडर किया। उसके बाद यहाँ पे फॉर मी
I have to talk about existence, I have to talk about valuation, I have to talk about all these things. यहाँ पे the first thing that leaps to my eye is the fact that this valuation was done by a person who was related to the who was a sibling of the finance director. तो यार इसके तो credentials पे मुझे बड़ा डाउट आ रहा है. So what I should do is valuation related procedure है which is again a financial statement assertion. मैं financial statement assertion के बारे में सोचूंगा. देन आई विल आस्क माई सेल्फ मैं कैसे चेक करूं इसमें क्या इशू हो सकता है एंड हाउ डू आई सॉल्व दैट इशू. यहाँ पे वैल्यूएशन में क्या इशू हो सकता है कि यार ये इसका ब्रदर है. तो ब्रदर होगा तो वो तो अपने मन से कुछ भी वैल्यू बता सकता है. ही कैन ओवरस्टेट द वैल्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई शुड डू इज आई शुड से consider the competence and capability of the valuer and get an understanding of his experience. ठीक है, how for how long has he been doing this particular activity and inquire, sorry spelling गलत हो गया, inquire about and inquire whether he has a membership of a professional body in valuing and whether he and inquire whether he has a membership of a professional body with respect to valuation. Just being a chartered accountant doesn't make me an expert in valuation. I have to get a membership of a relevant professional body. ठीक है, ये हो गया. अब this is not verification of the entire valuation activity, but just his capability, his competence, his qualification, and his membership. ठीक है. Then yes, Tahir. Sir, here we can include a point related to objectivity of the valuer because he is a family member. So, Yeah, yeah. So that we'll make that into a separate point. We'll not write it here. So we'll have to check whether the valuation undertaken by, or we'll have to verify or consider whether valuation undertaken provides an objective evidence and see with discuss with the management whether this person has any financial interest in the company and whether his relationship with the finance director could have any impact on the independence. So consider whether the valuation activity or valuation exercise that was done provides sufficient evidence about his objectivity. Also verify whether he has any financial interest in the company. Is he also a shareholder of the company along with being a relative of the director? ठीक है, whether he has any financial interest in the company and whether the personal relationship and whether the personal relationship could have any impact on his independence in the discharge of his duties. The fact that he is related to the director, is it impacting his independence while performing the duties? But अभी उसको बहुत footage मिल गया, सारे points cannot be, revolving around the finance, around, the valuation bit. ठीक है. Now, और क्या हो सकता है यहाँ पे? चार ही लाइन दिया है. सो योर आंसर नाउ हैज टू बी बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ आइटम्स अराउंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अब क्वेश्चन के पार्ट को ज्यादा रेफर करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. नाउ
ये वैल्यूअर होगा, दिस वैल्यूअर वुड हैव गिवन अ वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। वो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आप चेक करो एंड सी वेदर द वैल्यूज इन द वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आर रिफ्लेक्टिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और कहाँ जाएगा ये वैल्यू? उसके जो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट के वैल्यूज है वो जाएंगे आपके नॉन करंट असेट रजिस्टर में। उसके साथ साथ दे विल ऑल्सो गो टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो Equal to the revaluation surplus. आई बेग योर पार्डन। Sir, or it will both the values go into revaluation surplus. राइट, सेकंड इफेक्ट विल गो टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। बट यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन सरप्लस का बात कम करेंगे बिकॉज हमारा मेन फोकस है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, सो अग्री द वैल्यूज इन द valuation report submitted by the valuer and agree the values in the valuation report submitted by the valuer with the amounts entered in the non-current asset register and in the statement of financial position. These days, people refer to it as the statement of financial position more so in your syllabus. So maybe if I don't want to write full as statement of financial position, I use the short form SOFP. ठीक है. Now, I do know for a fact that IAS 16 specifically says that if one asset is revalued, then all the assets of that class have to be revalued. So check करो. Go back to IAS 16. Verify whether all assets of the said class have been revalued. ठीक है, in line with the requirements of IAS 16, in line with the Sir, is it necessary to know the accounting standard number? No, ACCA in its FAQs has very specifically told us that you don't need to remember the number of the auditing standard or the accounting standard. अगर आप मेरे रेगुलर बैच में आएंगे तो आई विल इंसिस्ट दैट यू लर्न बिकॉज यू आर स्टडिंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट द एंड ऑफ द डे, तो ये तो पता होना ही चाहिए। बट अभी व्हेन द एग्जाम इज सो क्लोज बाय, डोंट वरी ऑन दैट काउंट। ठीक है, ये सारा कुछ जो चल रहा है ये वैल्यू वेरीफाई करने के लिए ही चल रहा है बिकॉज यहाँ पे द सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर फोकस्ड ऑन रीवैल्यूएशन। तो आप बाकी के असर्शंस वेरीफाई करने में टाइम मत गवाना। 4 मार्क का आंसर है। फोर four well explained points are enough to fetch you marks. But because we are डिस्कसिंग इट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आपने पेपर में कोई भी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। लल्लू वाले पॉइंट्स लिख के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू राइट द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, नाउ we can come to Tahir, your point. Your point was with respect to revaluation surplus. ये सारे main points हो गए. Then you can write down, verify whether the amount of revaluation gain has been correctly recorded in revaluation surplus. ये पहले 4 पॉइंट्स के बाद का पॉइंट है। सो लाइक आई कुड से दिस इज अ लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, नाउ with respect to these assets that have been revalued, there will be a depreciation. अब depreciation is a calculation that you do at the end of the year. आपको क्या चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन इज इट करेक्ट और नॉट। सो इन सच केसेस योर प्रोसीजर शुड से recalculate the depreciation charge for the year to ensure that for the assets revalued, the depreciation is based on the revalued amount. तो अभी आपका depreciation should not be on the old amount. This is a matter of concern कि यार asset तो revalue हो गया but depreciation is still happening on the old number. So आप यहाँ पे लिखेंगे recalculate whether or recalculate the amount of depreciation and check whether the
depreciation has been calculated on the revalued amount and not on the uh, old value. तो इससे आपका depreciation का calculation will be verified. And एक अगर पॉइंट आपको हर जगह पे थोड़ा सा फेस सेविंग करना है, आपको थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट इंक्लूड करना है, यू कैन ऑलवेज मेंशन रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर एरिया। जैसे यहाँ पे रीवैल्यूएशन रिलेटेड पॉइंट है, तो रीवैल्यूएशन रिलेटेड डिस्क्लोजर्स के बारे में आप मेंशन कर दो। दैट इज ऑलवेज लाइक इज दैट कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट दैट यू शुड ऑलवेज राइट इन द आंसर। इट मेक्स इट वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। Review the disclosures made, review the financial statement disclosures relating to revaluation। एंड डिस्क्लोजर कैसे करना है ये कौन बताता है? डिस्क्लोजर कैसे करना है, दिस इज गिवन बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू revaluation and check whether they are in line with IAS 16। One thing that you must have observed here is आप सारे के सारे points देखो। The first word is always an action word. Obtain, consider, consider, agree, verify, recalculate, review, है ना? So each of these words is an action word कि ये करो। You are describing procedures. Procedure means what to do. So the verb is an action word that you are writing at the beginning. ठीक है? अब once we do a couple of questions more, we'll make a list of all the action words and what do they mean, and in what circumstance should you be using what word. Okay. First of all, take a moment right now. Just go through the steps. I'll be back in a moment, then we'll continue. If you have any questions with respect to these, please let me know. Anyone wants to ask absolutely anything? I can see something. सर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला पॉइंट कब लिख सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो जब ऐसा लग रहा है कि यार आई डोंट हैव इनफ पॉइंट्स टू आंसर माय क्वेश्चन, आई विल हैव टू डू इट दैट वे। ठीक है? थिंक देयर इज समवन एट द डोर, वन मोर। Also remember, for 4 marks, usually 4 to 6 well explained points are more than enough. If there are only 3 points, for example, then
फोर्थ पॉइंट लिख भी नहीं सकते। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ मार्क्स का अगर आपको कोरिलेशन लगाना है स्पेसिफिकली इन प्रोसीजर्स, इट शुड बी जितने मार्क्स उतने पॉइंट्स बेसिकली। एंड सेफ्टी सेक, दिस इज वन पॉइंट दैट आई ऑलवेज इंक्लूड, रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स। इट कैन नेवर गो रॉन्ग, इसमें आप गलती कर ही नहीं सकते, इसमें कुछ गलत करने का स्कोप ही नहीं है। सो ये एक एडिशनल सेफ्टी पॉइंट है। एंड I prefer writing 1 or 2 points more than the allocated number of marks. So by mistake अगर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो at least my answer is comprehensive enough to fetch desired marks. ठीक है? Okay. Let's look at inventory valuation. Your firm attended the year-end inventory count for Elonda Company and ascertained that the process for recording work in progress and finished goods was acceptable. Both WIP and finished goods are material to the financial statements, and quantity and stage of completion of all ongoing production was recorded accurately during the count. ठीक है. During the inventory count, the count supervisor noted that a consignment of finished goods compound E243, this is the name of the item, with a value of 7,20,000 was defective, in that the chemical mix was incorrect. The finance director believes that compound E243 can still be sold at a discounted sum of 4 lakh. ठीक है. So I have to now frame procedures to obtain sufficient and appropriate evidence in relation to valuation of inventory. They have made a very clear statement here कि आप existence और ये सब चीजों के बारे में बात मत करो, आप सिर्फ बात करो about the valuation of inventory. ठीक है. Now, first of all, your firm attended the year-end inventory count, ISA 501 के हिसाब से the auditor, there are certain, specific considerations that are there for the auditor. Attending the inventory count is one of them when it comes to inventory. He ascertained that the process for recording WIP and finished goods was acceptable. Both WIP and finished goods are material to the financial statements. दोनों items material है. And the quantity and stage of completion of all ongoing production was recorded accurately during the count. So 60% complete hai, 80% complete hai, 70% complete hai, that was very clearly described. During the inventory count, the count supervisor noted that a consignment of finished goods compound E243 with a value of 720 was defective, in that the chemical mix was incorrect. So whatever item this compound was, उसमें maybe the proportion was supposed to be 50-30-20, but उसमें chemical mix था, वो उसमें कुछ problematic calculation था. तो that is again another issue that they have observed. ठीक है. Now the finance director believes that compound E243 can still be sold at a discounted sum of 4 lakh. आपको यहां पे बताना है प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन. सी द फुल प्रोसीजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड अराउंड 7,20,000. ठीक है. इसके अराउंड सारा प्रोसीजर बिल्ड नहीं करना है, बट इसको लेके स्पेसिफिकली एक पॉइंट आपको बाद में मेंशन करना पड़ेगा कि ये सब डिफेक्टिव जो आइटम आपका बना था, वो डिफेक्टिव आइटम का जो वट एवर द कैलकुलेशन वॉज, वट एवर द केमिकल मिक्सेस, उसके लिए are there any specific inventory related procedures or inventory related activities that have to be specifically noted. वो एक बार आपको डालना पड़ेगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रेमिंग आवर आंसर. दिस इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. अब इन्वेंट्री में यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है? रॉ मटेरियल इज नॉट द फोकस पॉइंट. द फोकस पॉइंट इज वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, ये दोनों मेन है मेरे लिए. बट स्टिल व्हेन आई स्टार्ट माय प्रोसीजर, अगेन इन्वेंट्री में क्या है? 15 रॉ मटेरियल होगा, बहुत सारा वर्क इन प्रोग्रेस होगा एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन, और फिनिश्ड गुड्स होगा मेरे पास. सो व्हाट आई हैव टू डू इज
20 आइटम्स का एक टोटल आ रहा है एंड दैट टोटल इज गोइंग टू द बैलेंस शीट. सो ऑब्टेन अ स्केड्यूल ऑफ द आइटम्स, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. एंड कास्ट दैट टोटल ले लो टू कंफर्म द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यूज. एंड उसको आपको मैच करना है, किसके साथ मैच करना है? ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आपको उसको मैच करना है. ठीक है. सो दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. ऑब्टेन अ schedule of raw material, work in progress, and finished goods inventory. ठीक है. एंड देन व्हाट शुड यू डू? कास्ट. टोटल मत बोलो, यूज द वर्ड कास्ट एज एन टेक द टोटल टू कंफर्म the completeness and accuracy of these values and agree the total. We have replaced the word match with the word agree. And agree the total with the trial balance. आप टीबी मत लिखना, आप पूरा ट्रायल बैलेंस लिखना. with the trial balance and स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है. अब ये तो एक स्टैंडर्ड लाइन आइटम हो गया. एंड में एक स्टैंडर्ड लाइन आइटम हम लिखने वाले हैं अभी से. वी कैन डू इट. एंड में एक पॉइंट डाल दो. रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट disclosures relating to valuation of inventory and check whether they are in line with IAS 2. ये फिक्स, दो प्रोसीजर फिक्स हो गए मेरे, तो 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे मुझे. नाउ बीच का सारा कुछ आई हैव टू फिल अप. नाउ इफ आई एम लुकिंग एट वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, फर्स्ट थिंग, वर्क इन प्रोग्रेस कितना स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे है वो मुझे चेक करना है. से फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग अ टेबल. वो टेबल का स्ट्रक्चर बन गया है बट अभी पॉलिशिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज लेफ्ट. सो आई एम सेइंग दैट द टेबल इज 60% कंप्लीट. दैट इज व्हाट आई मीन बाय परसेंटेज कंप्लीशन. सो मैं फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा? आई विल ऑब्टेन द ब्रेक डाउन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कि कोई, एंड आई विल टेक अ कपल ऑफ आइटम्स फ्रॉम दैट. ठीक है. 20 अगर मेरे पास WIP स्टेज में है मटेरियल, तो मैं उसमें से मे बी आई विल टेक 5 आइटम्स. एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल marry that, I will check that percentage completion with the value that is given to me in the inventory count. ठीक है. सो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या मेरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो परसेंटेज कंप्लीशन है जो लिखा हुआ है, आई विल वेरीफाई वेदर फिजिकल इन्वेंट्री की काउंट के टाइम पे भी वही परसेंटेज कंप्लीशन निकला था कि नहीं. सो दैट इट शुडंट बी द सिचुएशन कि मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज सेइंग 50% कंप्लीट, बट माय फिजिकल वेरिफिकेशन जो एक्टिविटी हुआ उसमें इट इज सेइंग 70% कंप्लीट. Companies can very easily manipulate the percentage of completion in order to increase the value of inventory, है ना? So what I'll have to do is I'll have to first of all obtain a breakdown of the work in progress, take a sample of that, and उसको मुझे WIP schedule के साथ मैच करना है. ठीक है. So obtain a work in progress schedule and take a sample from the WIP listing and agree the percentage completion as shown by the management accounting records and verify it with the percentage completion ascertained during the physical verification process. ठीक है. सो ये मेरा एक डबल चेक हो गया कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दिया था वही फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस में आया है कि नहीं आया है. दैट विल बी अनदर verification part from my end. Then what I will do is
अब मुझे एक एक चीज को वेरीफाई करना है, ठीक है। सो अगेन आई विल टेक अ सैंपल ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, वैल्यू को वेरीफाई करना है, ठीक है। ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, दैट इज WIP एंड फिनिश्ड गुड्स। एंड फिर मैं क्या करूंगा, ऑब्टेन रेलेवेंट कॉस्ट शीट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में से ऑब्टेन रेलेवेंट कॉस्ट शीट्स। कॉस्ट शीट में आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सबका टोटल अक्यूमुलेट हो रहा होगा। एंड वहां पे आपको पता चलेगा कि इफ in my financial accounting records, in my balance sheet, if I am saying that I am valuing the inventory at cost and I am saying that the cost is 25, वो cost कहाँ से आ रहा है, वो कहीं से तो 25 का number is coming, that number is coming from my cost sheet, that is my management accounting records. So what I will do is obtain relevant cost sheets and agree the cost value in the cost sheet and agree the cost value in the cost sheet with the value used in the financial statements for inventory valuation, ठीक है। तो आपने 25 जो आपने यूज किया था इन द बैलेंस शीट फॉर वैल्यूएशन, आपने चेक किया कि ये फिगर मेरा कॉस्ट शीट में से आ रहा है कि कहीं और से आ रहा है, ठीक है। देन व्हाट आई विल डू इज, मैं एक एक करके आइटम उठाऊंगा कि अब वो कॉस्ट शीट में मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। व्हाट आई विल डू इज आई विल मैच द मटेरियल कॉस्ट इन द कॉस्ट शीट विद द परचेस इनवॉइसेस, labor cost I will match it with the wage records or the monthly payroll sheet, for example. So I will have to now confirm, or verify would be a better word, verify the material cost in the cost sheet with the material purchase invoices and verify the labor cost in the cost sheet with the wages register, ठीक है। एंड और तीसरा आइटम क्या होता है, ओवरहेड्स, वेरीफाई द कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स विद द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट या ऐसा कुछ। और आप ये चेक कर सकते हो कि द ओवरहेड्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री आर दोस प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स, अदर बिकॉज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, या कुछ एडमिन ओवरहेड होगा, तो दैट शुड नॉट गेट एडेड। सो मेंशन वेरीफाई whether the overheads in the or overheads included in the cost of inventory is, or verify whether the overheads included in the cost of inventory are all production overheads, ठीक है। उसके आगे ये हो गया मेरा वैल्यूएशन का एक मेजर पार्ट वेरीफाई। नाउ अनदर थिंग दैट आई कैन डू इज, ये तो कॉस्ट वेरिफिकेशन हो गया, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, है ना। तो अभी NRV का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे वो, आई विल सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर एंड आई विल असरटेन इफ द एंड व्हाट इज द NRV एंड हाउ इज द NRV कैलकुलेटेड, ठीक है। सो सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ finished goods at the end of the year and verify whether the net realizable value of these goods is above the cost or below the cost. If it is below the cost, then naturally the inventory should be valued at the net realizable value. Then also verify the calculation, or also verify the estimated sales value and selling cost which are used in
NRV calculation and check whether these are fair values of those figures. मतलब वो जो सेलिंग प्राइस जो आप यूज कर रहे हो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, is it the fair value of the item in the market right now? Because if the fair value is 50 and you are considering the NRV at say 60, then ये calculation गलत हो जाएगा. So check करो कि whether those values that you have chosen, those are correct or not. एक और चीज जो आप कर सकते हो, if you have done management accounting as a subject, तो management accounting में there is a concept called equivalent units, है ना? When you do process costing, when you do certain elements of the entire costing exercise, आप ये check करते हो कि what is the percentage completion, and you also calculate the equivalent units for ascertaining the cost. सो आप क्या करोगे, फॉर अ सैंपल ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, अगर आपको लगता है कि अगर आपको पेपर में याद आया कि यार ये इक्विवेलेंट यूनिट्स का पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, सो मेंशन दैट पॉइंट. बट अगर पेपर के हाई प्रेशर कंडीशन में वो नहीं याद आया, सपोज आपको 5 पेपर का एग्जामिशन था और आपने वो इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, या फिर ये आपको याद नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि यार आई हैव फार बेटर पॉइंट्स टू राइट, तो ये मत लिखो. अवॉइड दिस पॉइंट एंड मूव टू द नेक्स्ट वन. ठीक है? कि अपार्ट फ्रॉम दिस अभी आप और क्या वेरीफाई कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फिनिश्ड गुड्स. अगर आपको चेक करना है, टेक एन इन्वेंटरी एजिंग एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई स्लो मूविंग गुड्स. डिस्कस विद द मैनेजमेंट व्हाई these items are, if there are slow moving items or non moving items, please check करो whether they have been written down. And written, agar if they have not been written down, then you should ask the management why they have not been written down. If an item is lying in your godown for more than 6 months, that means उसका सेल नहीं हुआ है, उसका सेल होने का चांस भी कम है, तो द वैल्यू शुड हैव बीन रिटन डाउन इन दैट केस. ठीक है? फॉर finished goods, obtain an inventory aging report and check for any slow moving and non moving, I could call this obsolete items in the inventory report. Check whether these items have been written down. Because if they have not been sold, उनका कोई वैल्यू भी नहीं होगा, बहुत कम वैल्यू होगा. Check whether these items have been written down, and if not, inquire with the management as to why these have not been written down. रिटर्न राइट डाउन होना चाहिए, नहीं हुआ है तो पूछ लो मैनेजमेंट को कि तुमने राइट डाउन क्यों नहीं किया. ठीक है ना? ये हो गए आपके सारे के सारे मेन पॉइंट्स. ठीक है? अब ये जो आइटम था आपके पास, इन्वेंट्री of E243 compound with 7,20,000 ka value which is defective, and the director believes that the E243 compound can be sold at a discounted sum of 243. मैनेजमेंट को पूछो कि डू यू हैव प्लान्स टू डिस्पोज दिस, और ये 4 लाख कहाँ से आया. Ask them to give you a calculation or सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर दिस 4 लाख. ठीक है? अगेन ये जो 7,20,000 है, ये 7,20,000 का वैल्यू आप कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के साथ चेक कर लो. एंड इफ द आइटम इज गोइंग टू बी रीवैल्यूड, देन दैट इज द आइटम इज गोइंग टू बी रिटन डाउन, देन आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर द एंट्री फॉर राइट डाउन हैज बीन रिकॉर्डेड. ठीक है? सो ये जो 720 का डिफेक्टिव आइटम है, उसके लिए भी यू विल नीड स्टेप्स फॉर द inventory item, that is compound E243. Verify the cost of the item. ठीक है? Verify the cost of the item from the
management accounting records with respect to material, labor and overheads. ठीक है. Then inquire with the management as to how the estimated sale value of 4 lakh has been arrived at. ये कहाँ से निकाला तुमने वैल्यू? 4 लाख कैसे आ रहा है वो पूछो मैनेजमेंट को. ठीक है. हाउ द कॉस्ट ऑफ द आइटम, क्या है कॉस्ट ऑफ द आइटम? 7,20,000. इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से निकालो. इंक्वायर विद द मैनेजमेंट हाउ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 4 लाख हैज बीन अराइव्ड एट. देन if the item was sold after, what is the year end by the way? 30th April. Huh. If the item was sold after 30th of April but before the, चलो ये पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, and whether the inventory has been written down. ठीक है. So this is for compound 243. Now these are all the procedures that basically help you with what? That basically help you with वैल्यूएशन ऑफ आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. मैंने यहाँ पे जो भी डिस्कशन किया वो सारा का सारा डिस्कशन वाज विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यूएशन एस्पेक्ट. मैंने एग्जिस्टेंस वेरीफाई नहीं किया, मैंने कुछ भी वेरीफाई नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका वैल्यूएशन वेरीफाई किया. अगर आप कभी पीछे का आंसर यू चेक, यू माइट फाइंड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स विच आर रिटन इन अ स्लाइटली मोर डिफिकल्ट लैंग्वेज. या फिर you could also have a situation where some of these points are broken down into more points. But I have, for example, included all of them together in one place. Cost calculation of inventory, I have included that in one place. Compound E243, everything I have included that in one place. तो मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 7 points हो गए. ठीक है. I'll give you a minute, read it, I'll be back and then we'll continue. ठीक है. आप ये पढ़ो पहले. ताहिर पढ़ लिया? Yes, sir. वेरी गुड. अच्छा, यू गाइज ना, यू शुड आइडियली सॉल्व, वो जो प्री जून का मॉक है ना, वो आप सॉल्व कर सकते हो. एंड इफ यू वांट आई विल चेक इट ऑल्सो फॉर यू. बता देना मुझे अगर कर रहे हो तो प्लीज. पेपर के एक दिन पहले मत देना बिकॉज तब मेरा फीडबैक किसी काम भी नहीं आएगा. कर रहे हो तो अभी कर लो. डू वन मॉक, प्री जून मॉक करो. व्हाट आई एम ऑल्सो प्लानिंग इज वो प्री जून मॉक का एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा फॉर एवरीवन सो दैट यूट्यूब पे यू कैन वॉच इट. पेपर चेक करके दूंगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट वो एक आइडियल सोल्यूशन, आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो. इफ यू वांट डू लेट मी नो. ताहिर जी, और कुछ कर सकते हैं? सर एक डाउट सेशन अगर अरेंज हाँ हो वो तो जाता तो. करूंगा, अरे वो तो करूंगा. थोड़ा लेट नाइट चलेगा? नो प्रॉब्लम सर, वेन एवर यू फील कन्वीनियंट. ठीक है. यहाँ पे देखो, अब थर्ड वो तो मैं करने ही वाला हूँ डाउट सेशन, डोंट वरी. चलो. Substantive procedures that the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate evidence in relation to Elonda company's bank loan. Now when they say प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू बैंक लोन, यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं बोला है, यहाँ पे रीवैल्यूएशन नहीं बोला है, यहाँ पे ओवरऑल बैंक लोन ही बोला है आपको, है ना. एलोवेंडा कंपनी secured a bank loan of 2 years ago. Repayment of 2 lakhs are due quarterly with a lump sum of 8 lakh due for repayment in October 2005. The company met all repayments in 2004 on time but was late in paying the January and April 2005 repayments. So now your procedure has to incorporate the fact that two repayments were not done on time. So how do we go about it?
बैंक लोन है, लाइबिलिटी है। ठीक है। अब व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट आइटम्स ऑन द लाइबिलिटी साइड, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई करना पड़ेगा कि यार ये लोन है कि नहीं है। इज दिस लोन इन एग्जिस्टेंस? सो एग्जिस्टेंस वाला जो असर्शन है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। देन लोन का वैल्यू बराबर है कि नहीं है, द अमाउंट दैट आई हैव शोन एज आउटस्टैंडिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इज दैट अमाउंट करेक्ट और नॉट? सो व्हाट आई विल डू इज, I will check the last year ka, I will check the opening balance of this year with the bank statement, with the loan statement that I have received from the bank. I will also cross check this amount with what? I will also cross check this amount with the closing statement and closing balance of the previous year. So previous year financial statement का closing balance and current year financial statements का opening balance I will have to check. ठीक है। नाउ ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट वेयर मैंने ओपनिंग बैलेंस चेक कर लिया। व्हेन आई गो थ्रू द लोन अग्रीमेंट आई विल गेट टू नो कि वेदर द लोन इज स्टिल, whether the loan was given to me, and when I obtain a loan statement मुझे पता चलेगा that the loan is still outstanding, loan is still very much in existence. Then I will obtain a मैं बैंक को बोलूंगा कि यार प्लीज गिव मी अ बैंक स्टेटमेंट ऑन द लोन। वंस द बैंक शोज मी द बैंक स्टेटमेंट, आई विल वेरीफाई वेदर द रीपेमेंट्स वर मेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट और नॉट, एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक बार चेक हो जाएगा। देन specifically with respect to the fact that two payments were delayed, I will have to check any लेटरबाजी जो हुआ है बैंक के साथ, व्हाट इज दैट कॉल्ड, लव लेटर लिखना बैंक को, दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस। सो रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस विद द बैंक टू आइडेंटिफाई वेदर दे हैव टोल्ड दैट दे विल बी लेविंग एनी पेनल्टीज फॉर लेट पेमेंट। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, इट माइट हैपन दैट बैंक हैज पुट इन द लेट पेमेंट का पेनल्टी। ठीक है। बैंक ने तो लेट पेमेंट का पेनल्टी डाल के रखा है, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सो माई एक्सपेंसेस विल बी अंडरस्टेटेड इन दैट केस, और मुझे वो नहीं होने देना है। सो आई विल हैव टू चेक ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस दैट हैज हैपेंड विद द बैंक, वो एक पार्ट हो जाएगा। देन ईयर एंड बैलेंस का आई विल टेक अ बैंक कॉन्फर्मेशन। देन व्हाट एल्स आई कैन डू, लोन के केस में ना आप ऑलवेज चेक करो वेदर देर आर एनी debt covenants and whether those debt covenants have been breached. What is a debt covenant? A debt covenant is a condition imposed in the loan agreement. What would that condition be? Say for example, if your interest coverage ratio is less than 3, you will have to repay the entire loan on the day when it goes below 3. So you should check whether there are any debt covenants conditions like this in the loan and whether they are getting activated. कोई breach हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप check करना है। Otherwise क्या होगा, if that is the situation you will have to repay the entire loan, तो ये आपको loan agreement में check करना पड़ेगा। Then for these particular loans, for every secured loan basically, you have to see whether there is any security or any collateral that you have given against the loan, and what is the value of that particular item, उसको एक बार check कर लो। disclosure वाला point तो आएगा ही आएगा। another thing is, balance in the loan statement should match with the balance in the financial statements, so ये एक part हो गया। ठीक है। ऑल्सो लोन्स में अगर आपको याद होगा लीज लाइबिलिटी में, तो एफआर में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज द करंट पार्ट ऑफ लीज लाइबिलिटी एंड व्हाट इज द नॉन करंट पार्ट ऑफ लीज लाइबिलिटी। तो ये पार्ट भी आपको अलग से मेंशन करके रखना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन फ्रंट पे, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना प्रेजेंटेशन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट है स्प्लिट ऑफ द लाइबिलिटी इनटू करंट एंड नॉन करंट। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नो कि अगले 12 महीने में कितना पे करना है, सो कैश फ्लो पे कितना इंपैक्ट आएगा। सो दैट इज व्हाट द करंट पोर्शन टेल्स यू, एंड नॉन करंट पोर्शन विल टेल यू कि यार अगले 12 महीने के बाद कितना पेमेंट होगा। ठीक है। सो with respect to bank loan, you should verify the opening balance in the current period with the audited financial statements of the preceding year, and also verify the also verify the balance with the statement issued by the bank। ये ओपनिंग बैलेंस का वेरिफिकेशन हो गया। देन obtain a copy of
loan agreement to verify details of the loan regarding what? Regarding date of issue, terms of repayment, interest, collateral, etc. Also check whether the loan is outstanding at the reporting date. तो सारे के सारे डिटेल्स दिस इज बेसिकली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लोन. ठीक है. देन वेरीफाई द closing balance of loan shown in the financial statements with the balance in the लोन स्टेटमेंट. ये वेरीफाई कर लिया. उसके बाद बिकॉज यहाँ पे डीले हुआ है और एक अच्छा हाँ इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. रिकैलकुलेट द इंटरेस्ट shown in the financial statements and agree the amount of interest with the value shown in what? With the value shown in the loan statement issued by the bank. ठीक है. Then verify correspondence with the bank and check whether the bank has levied any penalties on account of late payments. ठीक है. Guys, frame the point. I'll be back in a moment. Verify correspondence with the bank, whether any penalties have been levied on account of late payments. Check whether the original agreement contained any clause with respect to levy of penalty for late payment. ये एक बात आप चेक कर लो. ठीक है. देन verify the presentation of balance outstanding in the statement of financial position and whether the current and non-current obligation has been split as per the whether the current and non-current obligation has been split on the basis of amounts due. Then review the financial statement disclosures. Review the financial statement disclosures and check whether they are in line with the requirements of relevant accounting standards. जैसे ये अगर फिनेंशियल लाइबिलिटी है तो इसके लिए एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज IFRS 9 एंड IFRS 7. फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो स्टैंडर्ड्स है दोज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर एप्लीकेबल. आपको अगर पेपर में नंबर याद नहीं आ रहा है तो देन ऑल्सो इट इज ओके. ठीक है. सो रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स एंड चेक वेदर दे आर इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. नाम याद आया तो ठीक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, नहीं याद आया तो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है. ठीक है. सो दिस इज हाउ द प्रोसीजर शुड बी फ्रेम्ड फॉर बैंक लोन. एक बार go through it and tell me if there's anything that you want me to add on to.
देख लो। प्रभात, you want to ask anything? Umang? Umang, are you also a CMA student by any chance? No, sir, no. Then I'm confusing you with another Umang then. I'm so sorry. देख लिया सबने? चलो, last part. Describe the procedure which the auditor of Elvanda company should perform in assessing whether or not the company is a going concern. Now, a going concern means that the business entity, going concern assumption का मतलब होता है that the business entity will continue in operation for more than 12 months from the balance sheet date. अब आपको ये वेरीफाई करना है वेदर द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। अब ये गोइंग कंसर्न प्रोसीजर्स आर नॉट स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन। दीज गोइंग कंसर्न प्रोसीजर्स कुड मोर और लेस बी यूज्ड इन केस ऑफ एनी अदर सिचुएशन ऑल्सो। तो एक 7 to 8 पॉइंट्स दैट वील डिस्कस राइट नाउ, आप उनको कहीं भी जहां पे भी गोइंग कंसर्न असेसमेंट आएगा वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग, माई अबिलिटी टू कंटिन्यू इन बिजनेस डिपेंड्स ऑन वॉट? My ability to continue in business depends upon Cash flows. cash flows. Do I have enough money kal chal ke if my creditors line up in front of my doorstep and they start demanding for money, do I have the money to pay them? Do I have enough cash to pay these people? If I don't have, they will ask me to यार धंधा बंद कर, अपने सारे assets बेच and pay us the money that you are supposed to deliver. So in this case, what I have to do is I have to specifically make sure कि मेरे पास कोई कैश फ्लो फोरकास्ट होना चाहिए, है ना? सो ऑब्टेन एलोंडा कंपनीज कैश फ्लो फोरकास्ट एंड चेक करो व्हाट आर द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। एंड इफ देयर सी फोरकास्ट है तो दीज आर फिगर्स, फ्यूचर के फिगर्स। अब पास्ट फिगर्स को तो आप बहुत अलग अलग डॉक्यूमेंट से यू कैन वेरीफाई, राइट? यू कैन गो एंड चेक कि भाई से फॉर एग्जांपल फिक्स्ड असेट खरीदा होगा, या हमने इस क्वेश्चन में वी डिड वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन का देयर इज अ वैल्यूएशन रिपोर्ट। all of these documents are already there. But if you are looking at a cash flow forecast, then predicting the values, coming up with what number should be written there, ye how did the company go about it? So wherever there is a forecast, what you should do is you should assess the assumptions whether they are correct or not. Are they reasonable? Correct se zyada the better word is reasonable. Check for the reasonableness of assumptions and discuss the findings with the management to understand if the company will have sufficient cash flows to meet all the liabilities. ठीक है? सो यहाँ पे लिखते हैं गोइंग कंसर्न। What should the business company do? You should obtain Alonda company's cash flow forecast and review the cash inflows and outflows mentioned therein. Verify, क्या चेक करना है आपको? Verify the reasonableness of assumptions. मतलब when I say reasonableness of assumptions, I'm not saying correctness. Sometimes you say ना कि अरे यार my boss is so unreasonable, मतलब it doesn't fit in logically with anything. It is not rational. आप चेक करो कि यार ये जो assumptions है, I can't say ना कि अगले साल I will have 10,000 students. Not possible. If this year I had 400, maybe I can say next year I will have 550 students. 400 का 4,000 नहीं होने वाला है. So this is the reasonableness of assumptions, and discuss with the management to understand what? If the company has sufficient cash flows to meet liabilities, to understand if the company has sufficient cash flows to meet its liabilities। सबसे पहला तो गोइंग कंसर्न वाला चैलेंज यही होता है,
है ना? देन यहाँ पे वी डिड स्पीक अबाउट डेट कॉवेनेंट्स इन द प्रीवियस पार्ट. नॉर्मल सिचुएशन में डेट कॉवेनेंट माइट नॉट बी सच अ बिग इशू, राइट? बट यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे कि आर देयर एनी डेट कॉवेनेंट्स, एंड इफ दे आर ब्रीच्ड विल इट ट्रिगर अ रीपेमेंट ऑफ द एंटायर लोन विच माइट टर्न माई एंटायर कंपनी अपसाइड डाउन. अगर मेरे लोन अग्रीमेंट में ऐसा कंडीशन डाला है कि यार इफ योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉल्स बिलो 3, आपको पूरा 50 करोड़ का लोन वापस करना पड़ेगा, तो वैसा हुआ तो फिर तो मेरा पूरा बिजनेस विल हैव टू गेट शट डाउन, सेल ऑफ द असेट्स एंड रीपे एवरीवन. सो चेक करो वेदर देयर आर एनी डेट covenants इन द loan agreements. Check whether there are any debt covenants in the loan agreements which when triggered are likely to lead to massive cash outflow requirements, which which if they occur might force the company into closure. ठीक है? क्लोजर इन द सेंस वो धंधा बंद करके आपको उनको पैसा वापस करना पड़ेगा, बिकॉज उतना पैसा तो है नहीं. द ओनली वे यू कैन जनरेट दैट मनी इज बिल्डिंग बेचो, गोल्ड बेचो, गाड़ी बेचो और उनके पैसे वापस करो. Then review the company's post year end sales and order book to assess the levels of trade. अब ये कब होगा? Suppose I have my own coaching center and मैंने 31st of March के बाद का projection दिया है कि every quarter I will enroll 500 students. Suppose that is my projection. Now audit हो रहा है जुलाई में. April, May, June ka quarter has gone by. I have a projection of 500 students. So, as an auditor, you should check whether the projection for that quarter was achieved or not and whether the cash flow was achieved or not. It could happen so that मेरा 500 students का projection है, मैंने 500 students तो achieve किया, but उसके साथ मेरा cash flow projection था 500 into 10,000 per student. But in order to encourage sales, in order to bring in more students, मैंने 6,000 7,000 में भी कोर्स बेच दिया. तो मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टारगेट तो अचीव हुआ, बट माय टारगेट रिगार्डिंग कैश फ्लोज वाज नॉट अचीव्ड. ठीक है? सो चेक द एक्चुअल डेटा पोस्ट ईयर एंड with respect to cash receipts and payments. ठीक है? To verify what, whether the level of projections have been achieved or not. To verify whether the level of projections has been achieved or not. एंड इससे आपको पता चलेगा कि यार वेदर द कंपनी इज ऑन द राइट पाथ. अगर ये नहीं हो रहा है तो इट माइट सो हैपन दैट company will not have enough cash to make all the payments that it is supposed to make. Then you should inquire with the lawyers कि भाई have you received any data about case being filed against the company, any litigation filed against the company which might have an impact on the going concern assumption. ठीक है? यू शुड ऑल्सो वेरीफाई द बोर्ड मिनट्स टू आइडेंटिफाई वेदर, सी बोर्ड में जो भी डिस्कशंस होंगे दोज आर डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली इन द फाइनेंशियल, दोज आर डॉक्यूमेंटेड इन द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग. तो वो आपको बोर्ड मिनट्स वेरीफाई करो कि यार ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ है बोर्ड मीटिंग में जो विच कुड हैव अ मेजर issue with respect to the going concern assumption. So, verify with the lawyers of the company whether any claims or litigation has been launched against the company which might cast serious doubts about the ability of the company to continue as a going concern.
ठीक है, देन आप क्या चेक करेंगे? चेक द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द board of directors, and again check if there are circumstances which cast a serious doubt on the ability of the company to continue as a going concern. ठीक है, बोर्ड मिनट्स चेक कर लिया, पोस्ट ईयर एंड एक्टिविटीज चेक कर लिया, देन चेक द मैनेजमेंट अकाउंट्स। जो एमआईएस आप मेंटेन करते हो वो एमआईएस आप चेक कर लो। आप मतलब जो कंपनी मेंटेन करता है, obtain a copy of management records slash MIS to verify the actual cash position and dues slash obligations, ये verify कर लो, and then check whether any disclosures are required with respect to IAS 1 with respect to going concern issue, and whether those have been made in the financial statements. And यहाँ पे आप here you can write a procedure which is basically about obtaining a written representation from the directors. See, written representation you can obtain only in those areas where it was the management's responsibility to do something. ठीक है, आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उसी एरिया में ले सकते हो वेयर it was the management's responsibility to do something and the management did not do it. ठीक है, हर जगह पे ये पॉइंट लिख के मत आना कि अरे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है कि इट इज द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू maybe implement the internal controls and ensure their operating effectiveness. अगर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट, तो यू कैन टेक अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बट यू कैन नॉट टेक अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिवैल्यूएशन का सर्टिफिकेट। दैट डजंट वर्क दैट वे। सो एक पॉइंट हमेशा आपका आ सकता है अबाउट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वेयर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, so this is how you would frame the procedures around going concern. ठीक है, I'm pausing the recording for a moment. चलो, let's look at a couple of MCQs specifically based on ethics and professional courtesies and all of that. You are an audit manager in Bark and Company and have been assigned to the audit of Foliage Company for the first time this year. Foliage Company is a listed company which specializes in manufacturing musical instrument. You will be taking over from Kim Bom, sounds like Kim Jong-un, the audit manager who has been in charge of the audit for the last 3 years. Kim has just announced that he is leaving Bark and Company to join Foliage Company as the finance controller. Kim has recently completed the planning for the current year audit in preparation for the final audit, which is due to commence next month. Looks very, very shady behavior. He has made the audit plan, then he will go and join the client on the other side, और फिर वो खुद का ऑडिट कैसे करेगा, उसका खुद से प्लान बना के गया है। He's like over smart. Jane Leaf has been the audit engagement partner since Foliage Company became an audit client almost 8 years ago. As she has completed 7 years as the audit engagement partner, Jane has recently been rotated off the audit engagement. The new audit engagement partner, Chang Petiol, has suggested that in order to maintain a close relationship with Foliage Company, Jane Leaf should undertake the role of engagement quality reviewer this year. The total fees received by Bark and Company from Foliage Company in respect of all services provided in the last year amounted to 16% of the firm's total income. The current year's total fee income for audit, tax, and other audit related services is expected to be greater than last year. यहाँ पे, you know, as I always say, this is not a red flag. This question is a red carpet. जहां देखो वहां आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रहा है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स एवरीवेयर, स्टार्टिंग विथ द फैक्ट दैट
खुद का ऑडिट खुद ही करने का भाई साहब ने पूरा अरेंजमेंट करके रखा है। एंड the audit engagement partner who was the audit engagement partner earlier, उसी को बोला है कि बहन आप बन जाओ हमारे एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। तो मैं तो भाई I see this as like a motley of issues in one place, and that is very, very scary. What is the most appropriate response to the suggestion that Jane Leaf takes on the role of EQR? She should take the role immediately? Definitely no. Acha, who can tell me, are there any safeguards that have been put in place if the situation is that the engagement quality reviewer, if the person is an engagement partner and then he has been asked to become engagement quality reviewer after exiting the audit, कुछ safeguards डाले हैं हमारे procedures में in the study text? Yes, sir. They must observe cooling off periods. Okay. And is it different for listed companies and different for unlisted? Sir, for listed companies, it is a must, and for unlisted, uh, For maybe unlisted. there could be separate engagement teams or separate different engagement quality reviewer. ओके, यहाँ पे एक बार वो पढ़ लो आप, बट यहाँ पे योर पॉइंट इज फेयर। दिस इज अ लिस्टेड कंपनी, शी शुड टेक द रोल immediately but with additional safeguards. She should not serve as the EQR for a period of at least 5 years. ये करेक्ट है। Bark and company will need to consider resigning as auditor of foliage. No, why should Bark and company resign? She should not be considered for the EQR. EQR के लिए what is an engagement quality reviewer? Who can tell me what is the job of an engagement quality reviewer? Sir, the engagement quality reviewer inspects the audit evidence and the quality of audit in totality. They undertake a independent review of the engagement review, and they comment upon that. So very clearly यहाँ पे this is a listed company and engagement quality reviewer is basically from a quality control perspective, ऑडिटर ने या ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ने ऑडिट कैसे परफॉर्म किया है बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड, देयर इज अनदर पर्सन हु इज चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द रिपोर्ट बाय परफॉर्मिंग अनदर रिव्यू ऑन द रिव्यू दैट इज ऑलरेडी डन। दिस इज रिव्यू का रिव्यू। ठीक है। एंड इन हर केस ए देर आर सो मेनी चैलेंजेस दैट विल कम अक्रॉस कि देयर विल बी familiarity थ्रेट, ये सारे अलग अलग इश्यूज उसके केस में आएंगे। सो she should not serve as the engagement quality reviewer, plus this condition has been given in the ethics wala chapter also very, very clearly. Which of the following is the least appropriate response in relation to fee income received by Bark and Co from Foliage? Bark and Co should assess whether audit and non-audit fees would represent more than 15% of gross practice income for 2 years. If the recurring fees are likely to exceed 15% of annual practice income this year, Bark company will need to resign. If the recurring fees are likely to exceed 15% of the annual practice income this year, additional consideration should be given as to whether the taxation and audit related services should be undertaken by the firm. If fees do not, if the fees do exceed 15%, this should be disclosed to those charged with governance at Foliage Company. What do you think we should do? First of all, आपको threshold limits are different for listed and non-listed clients, है ना? दोनों के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है। सो हाउ शुड वी टैकल अ सिचुएशन ऑफ फी डिपेंडेंस? हु कैन टेल मी? फी डिपेंडेंस ऑन अ लिस्टेड क्लाइंट, उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? Sir, increase the client base to reduce dependency upon one client. Okay. Increase the client base. Fees generated from one audit client, if it represents a large proportion of total fees, then there is fee dependency. Over dependence on one client nahi hona chahiye. So you should either, leaving the client probably, or dropping off that particular assignment is not the right approach. You should see whether you can expand your existing client base so that the dependence on this client is reduced.
If Bark and Company should assess whether audit and non-audit fees represent 15% of gross practice income for 2 consecutive years. Yes, they should check. Then the question requirement is least appropriate response. इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? The question is not इनमें से क्या करना चाहिए. The question is इसमें से क्या नहीं करना चाहिए. So your success in the exam depends on your ability to focus on these words. Least appropriate. If the recurring fees are likely to exceed 15% of annual practice income this year, Bark will need to resign as auditors of Foliage Company. I don't remember looking at this option ever कि client छोड़ दो. ये तो कभी नहीं होता है. So least appropriate response. इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? You should not resign as the auditor of Foliage and Company. So this is your answer. Focus on the word least appropriate. If you don't get that part right, आपने एग्जाम में आप excited हो, which of the following is the appropriate response? You just read that. You will end up picking the wrong answer. Nowhere in the or in the professional ethics part have we ever come across the fact that uh, have we have never come across a situation in the professional ethics part where rarely बहुत कम situations में ऐसा होता है कि we have to leave the assignment, right? We put in safeguards. Say for example there is an audit team member who owns a lot of shares in that company. तो हम assignment नहीं छोड़ते हैं, हम member बदलते हैं. We ask the member to leave. तू मत जा, तेरे जगह पे किसी और को we'll take up. Or if it is the audit engagement partner who owns shares in that company, we'll change the partner, but we'll not let go of the assignment. So वो वाला जो एक solution है कि यार recurring fees are likely to exceed 15%, छोड़ दो assignment को. That's never the right approach. So your answer should be option B. What action should Kim Baum have taken when the possibility of employment with Foliage Company arose? Kim should have notified Bark and Company of the potential employment so he could be removed from the audit team. Ideally, yes, he should have done this. That is what the code of ethics specifies, that if even if you don't take up but an offer has come to you, you should notify the ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, फर्म को बता दो एंड गेट योरसेल्फ रिमूव्ड फ्रॉम द ऑडिट टीम. रियल लाइफ में ना ऐसा कोई नहीं करता है. सब जाके क्लाइंट का एम्प्लॉयमेंट उठा लेते हैं. एंड यू नो हाउ दे डू इट? पहले अप्रेजल लेंगे करंट कंपनी में, 13 लाख का सैलरी 16 लाख करेंगे. फिर वो ऑफर लेटर क्लाइंट को दिखाएंगे, फिर क्लाइंट से 20 लाख लेंगे. सो इन अ मैनर, इन अ स्पैन ऑफ 5 months और 4 months, they go from 13 lakhs to 20 lakhs just like this. So real life mein unfortunately people are not ethical, but here you are expected to tell what is the ethical response, not what a crooked person would do. So your answer has to be option A. Kim should have declined the offer of employment. This is a free world. You can't tell anyone कि यार उसके पास job मत कर या don't go and work with someone else. You can't say that. But you can expect the person to tell you that I have been given an offer, so they would remove you from that assignment. Kim should not have applied for employment with an audit client. Maybe he did not apply for the employment. Client को उसका काम अच्छा लगा, client approached him. So option 3 is in a way stupid. Kim should have asked for permission from Bark and Company. Nobody asks for permission, and that is not the expectation also. ठीक है. So again you are, you know, again coming back to option A. Which ethical threat will be created when Kim Baum commences employment with the client, and what action should be taken to manage the threat? इंटिमिडेशन, familiarity, confidentiality, सेल्फ रिव्यू. इंटिमिडेशन इज डराना धमकाना, है ना? Familiarity is becoming too familiar with the client and his work and the financial statements, the ledger, everything. ठीक है. Then confidentiality and self review. ठीक है. Think about it. Intimidation, and you have to it's like a match the pair basically. What ethical threat will be created when Kim Baum commences employment? Will intimidation threat be created and the manager should not be allowed to take the role of financial controller? Familiarity threat will be created. The composition of the audit team must be reviewed and changed as appropriate. Confidentiality, manager should not be allowed to take the role of financial controller. Self-review threat, composition of the audit team must be reviewed and changed as appropriate. Now, confidentiality क्यों नहीं आएगा?
Confidentiality is information that I have obtained in the course of performing my duties. If that information I disclose to others, and then there is a confidentiality problem. When I was performing my duties as an auditor, I gathered some information and that information I leaked. ठीक है, तो that becomes a confidentiality threat. Here I, as an auditor, I know less about the company than the company employees. So there is no scope of me leaking any information. See, that is company का ही information ना, मैं company का information ताहिर का secret में जाके ताहिर को बताऊंगा तो वो secret नहीं है ना, that is he knows about it himself. So confidentiality is not a challenge here. The composition of the audit team must be reviewed and changed as appropriate. Self review कब होगा? When earlier आई वॉज विद द क्लाइंट, मैं क्लाइंट का एम्प्लॉय था, वहां से मैं ऑडिट टीम में आया एंड ऑडिट टीम में आके देन आई एम ऑडिटिंग द वर्क आई हैव डन एज द क्लाइंट एम्प्लॉय, तब जाके सेल्फ रिव्यू थ्रेट आता है. सेल्फ रिव्यू थ्रेट खुद का काम रिव्यू करने का थ्रेट है. तो दैट विल हैपन व्हेन द पर्सन इज मूविंग फ्रॉम द क्लाइंट टू द ऑडिटर. व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम द ऑडिटर टू द क्लाइंट, सेल्फ रिव्यू नहीं होगा. सो सी भी नहीं है. वी शुड नो द रीजन फॉर नॉट चूजिंग दीज ऑप्शंस. डी भी नहीं है. Intimidation. The manager should not be allowed to take the role of financial controller. And familiarity. The composition of the audit team must be reviewed and changed as appropriate. Intimidation. Manager should not be allowed to take the role of finance controller. Even if he becomes the finance controller, how is that intimidating the existing audit team? It is not. So this is out. Familiarity. The composition of the audit team must be reviewed and changed as appropriate. People who were close to this particular person, है ना, he was, you know, their manager, he was leading them, and the team would have personal equations with them. They might be too trusting of him, they might have problems with him, and that could be an issue. Hence, the answer is familiarity. Actually, there are, you know, you could be close to your ex-boss. Quite possible. I haven't been close to any of my ex-bosses ever. Not when I was working with them. Definitely not after leaving them. But yes, it could be possible in another world. ठीक है? And state whether the following statements prescribe a rule book approach or a conceptual framework approach. Clearly define laws for the auditor to follow. If it is clearly defined laws, then it is a rule book approach. वही follow करना है. Useful in a dynamic environment, you have to look at the situation, understand the facts of the case, and then come up with an appropriate response. Conceptual framework. Rule book approach क्या बोलेगा? ये चार situation है, इसका ये चार solution है. फिफ्थ अगर कोई सिचुएशन आया तो रूल बुक अप्रोच विल से कि यार इस ये तो रूल बुक में लिखा ही नहीं है, वी डोंट नो व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच विल से कि ओके, ये एग्जैक्ट सिचुएशन मे बी इज नॉट डिफाइंड बट सिमिलर सिचुएशंस के लिए वी हैव अ सॉल्यूशन. लेट्स ट्राई टू मैच द फैक्ट्स एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन. सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच वर्क्स देयर. A set of guidelines with which the auditor uses judgment to apply to specific circumstances. Set of guidelines, not rules. Guidelines which the auditor uses judgment. Judgment मतलब वो उसके circumstances के facts current situation को apply करेगा, अपना दिमाग लगा के appropriate solution देगा. That is again conceptual framework. And easy to know what is and not allowed. What is allowed and what is not allowed, if it is easy to know, it is a rule book approach. You know, offices के बाहर लिखा होता है smoking is not allowed inside the office. So people go down and smoke, which means rule is very clearly defined what to do and what not to do. ठीक है? Any questions in any of the five circumstances that we saw? Zaid, Tahir, Umang, Pragati, anyone, Srushti, No, sir. Oppo CPH2531, आप जो भी हैं, आपको कोई डाउट है? आप अगर आपका नाम बताएंगे तो हम आपको नाम से बुलाएंगे. I can't hear you. Can you type it out in the chat box, your name? For how many of you, just tell me by a show of hands, for how many of you is this the last skill level paper?
Understood. Someone else also raised hand. Srushti. Yes, Srushti's case I know, of course. Where are Sir, we? I have sent you 3 screenshots from the study up regarding the ethics problems. ठीक है, ले लेता हूँ. Sir, there's also one question that always comes in the paper is regarding the composition of the audit team. Okay. Do you have a specific question? I can take that up with proper explanation. No, sir, I don't have one specific question, but uh, in exam, one MCQ always comes about the composition of the audit team. So if um, Okay. like if he has a financial background or something. Okay, let me see if I can find a question like this. नहीं होगा तो I'll just give you a general feedback on how to tackle that one. Yes. ठीक है. चल. I'll open Tahir's question. Sir, how is your health? Health, abhi I have a little fever, but it's okay. Manageable. Arey, it's nothing else. Yesterday I had a session from 10:30 in the morning till 5:30 in the evening, SBL pre-scene. And then again from 6 to 8 I sat for another FM class. तो 9 hours हो गया था तो nothing else. Got it, sir. वो होते रहता है मुझे हर क्वार्टर ना when the quarter comes to an end because there are like 20 things I'm doing at the same time. My body gives up for 1 or 2 days कभी कभी unfortunately. ठीक है हो जाता है. For which two of the following situations should an auditor make a voluntary disclosure? If the auditor knows or suspects that his client is engaged in money laundering, where disclosure is made to non-governmental bodies, where it is in the public interest to disclose, if an auditor suspects his client has committed terrorist offenses, my God. See, voluntary disclosure मतलब अपने आप से he has to disclose. There is no compulsion on him to disclose, but अपने आप से he feels like it is worthy of a disclosure. ठीक है. For which two of the following situations should an auditor make a voluntary disclosure? See, if he suspects that his client is engaged in terrorist financing activities, he has an obligation. उसको जबरदस्त मतलब the law has made it mandatory for him to disclose that. अब ये every country has a different law. For example, in India, we have the Prevention of Money Laundering Act. In different countries, you have different laws. And if your client is engaged in money laundering, if he is engaged in terrorist financing, then it is a compulsion for the auditor. See, the law always supersedes the accounting standard, auditing standard, professional ethics, and everything. Law is the highest authority, everyone else is below that. If what do you mean by disclosure is in public interest? Public interest का ना definition कहीं पे दिया नहीं है. They have not defined public interest anywhere, but anything which harms the general public conscience or general public trust in the economy or something like this, then you will have to disclose that particular matter. ठीक है. Which of the following fraud risk factors indicates an incentive to commit fraud? Incentive to commit fraud. Poor documentation, lack of tone at the top, that is a culture issue. It is not an incentive, it is just like bad behavior set from the top management. High expectation of investors, no, that might not be an incentive to commit fraud. A senior manager who feels unfairly treated by the employer, this is not, I mean, यहाँ पे तो you are only speaking from an audit perspective, but in real life also people feeling the fact that okay, I wasn't treated well or I was insulted. We have so many Hindi movies just built around this concept कि यार बदला. That is an incentive to commit fraud. So which is why the answer is option D. एक सर उसका आंसर ही ऑप्शन सी है, इसके लिए high ही तो मैंने सबको expectations of investors. Okay.
Senior manager who feels unfairly treated. Incentive to commit. I'll have to just give me one moment. They have used option C by saying that it is a high incentive to commit financial fraud. Even option D, by the way, for that matter, comes under an incentive to commit fraud. But the idea, so maybe the reason why they have made that distinction between option C and option D is that senior manager who feels unfairly treated, that could be his justification for committing a fraud, not an incentive to commit a fraud. Justification is you coming up with your own reasons कि यार ये करना सही क्यों है. Incentive is something that is pushing you. Say for example, somebody says ki double A के class में get 100% result and we'll give you maybe 5 lakh rupees for that. That is an incentive. That is not justification. But I want to prove to the world that you know I deliver the best results, for example, and मैं यहाँ वहां से paper leak करवाता हूँ. And then I say कि no, अरे the world was very unfair with me and hence I wanted to correct the wrong that was done to me. Hence I am choosing hence I'm going down this approach which is otherwise fraudulent. That is a justification. So statement D there, they have treated it like a justification, and key, this is not an incentive. This is not what uh, pushes you to commit a fraud. This is something that becomes your reason when somebody asks you कि तुमने ऐसा क्यों किया. That becomes your reason to justify कि इस reason से मैंने ये fraud commit किया. So that is how they have distinguished between the two. And let's have a look at the last question from your end, which is this. The directors of Exit Company, a listed company, have decided to issue an annual environmental and social responsibility report and have asked the company's auditors, Stu and Company, to provide an assurance report on it. If accepted, the fee income from Exit Company would be slightly less than 15% of Stu Company's total fee income. What should Stu and Company do now? Resign from Exit Company, decline the additional work, rotate the engagement partner, determine whether a pre-issuance review might be a safeguard. Can you tell me the distinction between a pre-issuance review and a post-issuance review? One is called a hot review, the other one is called a cold review. Pre-issuance review means audit report issue करने के पहले the audit work that was done by the audit engagement partner, that is reviewed by the engagement quality reviewer. That is a pre-issuance review, which means just imagine what if the audit engagement partner felt compelled to give a particular opinion because he felt यार अगर if I do not give an opinion that suits the requirement of the client, तो my relationship with the client might become rocky, client छोड़ के चला जाएगा. So even though he has identified certain issues in the audit, he does not mention those points in the audit report. And right now the fee is not, it hasn't crossed 15%, but it is about to cross 15%. That is the situation, right? It is about to cross 15%. So uske man mein there can be a conflict of interest. There can be that feeling कि अगर मैंने adverse opinion दे दिया, अगर मैंने qualified opinion दे दिया, तो ये client छोड़ के चला जाएगा, which is why the fear is that he has not highlighted the issues that he was supposed to highlight. Now, if you conduct a pre-issuance review, usse kya hoga? There is an independent third party who is not connected with the audit directly. He or she is coming in, and that person is checking the work done by the audit partner. Ki bhai, was his opinion objective? Was his approach independent? Was he affected by fee dependence and all of these issues? And if the engagement quality reviewer before issue of the audit report says ki हाँ भाई, we went through the work done by the auditor, we reviewed the reviewer's work and we feel ki his work was not impacted in any way by any of these issues. So even if there was fee dependence, his objectivity was not impacted in any way. So अगर engagement quality reviewer बोल देता है कि हाँ चलो ठीक है, there is no problem, you have to, that is the job of a pre-issuance review that is happening. So resigning from the
assignment or rotating the audit engagement partner might not be the best possible solution. What would be the best possible solution? Declining the work also is not an answer right now because you have not crossed 15%. A pre-issuance review, you have to see whether that can serve as an adequate safeguard. If it does, then you go ahead with that. Sir, so the engagement quality review is the one who takes this pre-issuance review. Yes. He is the one who does it. Yes. बिकॉज मैं खुद का रिव्यू नहीं कर सकता ना. इफ आई एम द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, तो मैं खुद का काम कैसे रिव्यू करूंगा? दैट वुड बी अनफेयर एंड दैट वुड बी पॉइंटलेस ऑल्सो. फॉरगेट अनफेयर, दैट वुड बी पॉइंटलेस. खुद का काम कैसे रिव्यू करूं मैं? राइट? सर, तो ये ऑडिट एंगेजमेट होने के पहले होता है ना कि बाद में होता है? नहीं नहीं नहीं, प्री इश्योरेंस. प्री इश्योरेंस, इश्योरेंस ऑफ इशू, व्हाट? ओके इश्योरेंस ऑफ ओके। ऑडिट रिपोर्ट. यस उसके यस। पहले आप ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे हो. इट्स लाइक हु विल चेक द चेकर. आप यस चेकर का यस। काम चेक कर रहे हो. ऑडिटर इज अ चेकर, राइट, इन मेनी मेनी वेज. आप चेकर का काम फिर से चेक कर रहे हो. दैट इज प्री इश्योरेंस रिव्यू. दैट इज अ हॉट रिव्यू. व्हाई इज इट कॉल्ड हॉट रिव्यू? बिकॉज ये ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले कम टाइम में फटाफट रियल टाइम में खत्म करना है. कोल्ड रिव्यू इज पोस्ट इश्योरेंस रिव्यू. ऑडिट रिपोर्ट हो गया, क्लाइंट को ऑडिट रिपोर्ट चला गया, सब खत्म हो गया. उसके बाद द क्वालिटी रिव्यू डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन सिट्स टुगेदर, पिक्स आउट अ कपल ऑफ केसेस, और उसमें ये सारा वेरिफिकेशन वो करते हैं. दैट इज अ कोल्ड रिव्यू. ओके सर। ठीक है. कोल्ड रिव्यू इज ओनली फॉर इंश्योरिंग कि यार अगले साल जब हम ऑडिट करेंगे, वी डोंट वांट टू फेस चैलेंजेस, वी डोंट वांट एनी ऑफ दिस टू इम्पैक्ट अस. हॉट रिव्यू इज ऑडिट रिपोर्ट जाने से पहले करंट ईयर में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको सॉल्व करो सो दैट ऑडिट रिपोर्ट डज नॉट गेट इम्पैक्टेड. इट इज अ सोल्यूशन बिफोर द प्रॉब्लम कैन अराइज. कोल्ड रिव्यू, पोस्ट इश्योरेंस रिव्यू, इस सब हो चुका है. अगले साल के लिए आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. दैट इज द पॉइंट. ठीक है. यस सर। ओके. नाउ just one small request for everyone. Each one of you, if you could tell me in message, not right now, take your time. If you could identify certain MCQs, if you could identify procedures, risk, or other questions, Meka, one question that you find the most difficult, I will make sure that I record that much part and give it to you on YouTube. But आप मुझे just बता दो so that I will quickly start working on it. कर सकते हैं ये सब लोग? यस सर। ठीक है. व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दो या पीसी पे बता दो, मुझे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज आई हैव टू बी समवेयर राइट नाउ, सो आई हैव टू स्टॉप द सेशन, बट आई विल रिकॉर्ड इट एंड गिव इट टू यू ऑन द यूट्यूब चैनल. वर्क्स? यस सर। परफेक्ट. Sir, Yes. regarding the question about the 15% fees, so if it exceeds 15%, the auditor should resign. Resigning, see, then you will have to check whether it has been the case for 2 consecutive years or not. And if it is a listed client, then he will have to resign. Okay, sir. ठीक है. Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम. ठीक है. Just mention it to me in the chat and I'll work on it. Okay. चलो. Thank you so much, guys. थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। Bye. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye.